To get over rejection. Yes, that's what we are going to talk about in this video today. आपको जब नो सुनते हो या जब कोई रिजेक्ट कर देता है तो कैसा महसूस होता है? क्या आप सोचते हो रिजेक्शन मिले, नो मिले, उससे बेहतर है मैं बोलूँ ही ना, मुझे जो चाहिए वो मांगूँ ही ना, एक्सप्रेस ही ना करूँ, शेयर ही ना करूँ, एटलीस्ट द चांसेस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड विल गो टू nil, almost nil? And what happens in the process? Hi, I'm Astha Tatia, and as a happiness coach, I help leaders become the most sought after leaders by having deep connects and meaningful relationships in their organizations. Do hit the like button if you find this video meaningful. Also, subscribe to the YouTube channel. Well, जब rejection की बात आती है, we don't like being rejected, right? Because rejection को एक negative connotation दिया गया है, reject कर दिया मतलब मुझ में कोई कमी है, yeah, and sometimes we even associate it with failure. Now, what we need to understand is that, there is a fear behind it, right? So every time that fear grips you, that, okay, I'm going ahead and asking for something, I'm going ahead and expressing myself, मैं जाकर कुछ share कर रहा हूँ, अगर reject हो गया तो हम सब में ये fear होता है कहीं ना कहीं. The levels may vary. For somebody it's huge, for somebody it's little bit, and that also comes from where? From our conditioning. From conditioning, one, that the whole rejection is such a big deal, nahi hona chahiye, number one. Number two, some experience in the past जहाँ पर रिजेक्शन मिला या किसी ने ना कह दिया, समथिंग दैट यू वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड यू गॉट रिजेक्टेड देयर, और उसके इर्द गिर्द जो भी इमोशन था, आपने जैसे उसके साथ डील किया उस मोमेंट में, दैट टर्मोइल, दैट ट्रॉमा हैज स्टेड विद यू एंड यू फील नो नो नो, रिजेक्शन तो मिलना ही नहीं चाहिए, इट्स सच अ बिग डील. सो इन सब की वजह से जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पर you have a probability the other person, or the people or an organization will say a no, you kind of either avoid it if you can. अगर आपको लगता है इसको avoid किया जा सकता है तो मत करो. कई बार हम क्या फील कर रहे हैं वो भी नहीं बताते हैं, क्योंकि हमें लगता है पता नहीं मेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट की जाएंगी या रिजेक्ट कर दी जाएंगी, तो बेटर है मैं अपने तक ही रखता हूँ. कई बार जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है आपको, ऑफ कोर्स नाउ दैट्स नॉट समथिंग यू कैन अवॉइड, राइट? यू हैव टू गो फॉर इट. तो आप जाते हो लेकिन उस फियर के साथ जाते हो, व्हाट इफ आई एम रिजेक्टेड. एंड नाउ इमेजिन उसका इम्पैक्ट क्या है जब इस फियर के साथ जा रहे हो, या जब जा ही नहीं रहे हो, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो क्योंकि रिजेक्ट ना हो जाऊं. दोनों केसेस में इम्पैक्ट क्या? आर यू बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ? जब वहाँ इंटरव्यू के लिए चले गए हो और यही चल रहा है क्या होगा, रिजेक्ट ना हो जाऊं, तो यू नॉट एबल टू गिव योर 100%. आप नर्वस भी होगे, आपका कॉन्फिडेंस भी विल गो फॉर अ टॉस. आप बहुत कुछ कर सकते हो, केपेबल भी हो, बट कर नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ दैट होल फियर. इट हैज ग्रिप्ड यू. सेकेंडली, जब आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, मे बी इन अ रिलेशनशिप, you want to share your feelings, but the fear of being rejected stops you from doing it. How much of suffocation do you feel? कैसा महसूस करते हो? अंदर ही अंदर वो चलता रहता है. Then it impacts your health, right? It makes you feel very low. What does that do to your relationship? And people do that all the time, right? So do you want to live with that impact? Now, what you need to see here is एक अलग perspective अगर इसका ले सको. How about viewing the rejection as an opportunity? An opportunity to look at, okay, is there something that deserves merit? So let's say I went ahead and I shared what I had to share in terms of my feelings, and the other person rejected. Now, whatever he spoke about it, he or she spoke about it, you have two ways to look at it. Number one, it's an opportunity for me to see
where do we stand. It's an opportunity for me to see what can I work on. हो सकता है कुछ ऐसा है जो मैं मैं कर रही हूँ और जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है या स्कोप ऑफ एक स्कोप है जहाँ मैं वर्क कर सकूँ अपने आप पे. तो एक तो वैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है. दूसरा मैं ये देख सकती हूँ कि नो, इट्स नॉट अबाउट मी ऑल द टाइम. The other person is coming from his beliefs. Whatever he or she thinks is right, acceptable, not working, that does not mean anything about me necessarily. Right? Because whatever he or she is saying is from his beliefs, his past, his thought process कि ये ऐसा ही होना चाहिए. But अगर उसको मैं अपने लिए personally ले लेती हूँ, then of course I'm bound to suffer. So looking at it, maybe that will give you a perspective into what does that relationship really mean? Where does it stand? Similarly, for the job interview, agar reject hote ho, to looking at it as an opportunity. What area do I need to work on for myself? And that doesn't say anything about me that, okay, I am useless or I'm a failure, ya mere bas ki nahi hai, I'm not good enough, I got rejected yet again. No, it just says that I need to re-look at something which is not working right now. एंड जब तक आप उसको नो NO बड़ा नहीं मान लेते हो ना, तब तक वो नो नहीं है. इट्स ऑल हियर. योर ब्रेन विल जंप एट इट. देखा, नहीं कर पाया, पता था रिजेक्ट हो जाएगा. Imagine you going with that fear for the interview, you perform whatever you perform with that fear, and if you get rejected, you're only reinforcing that belief. मुझे पता था मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा. Yeah. Another opportunity that you can look at it is, why not ask the organization, let's say if it's about the interview, can you give me a feedback? Why did you reject me? Why did you say a no? Can I really get to know? Won't that be powerful कि कोई आपको ये बता दे कि exactly काम कहाँ करना है, exactly वो क्या है जो sync में नहीं था. Yeah. So using it as an opportunity to know yourself better, to find out what do you need to work on so that you can next time bounce back with more power and with what is really needed. If you really want that job or that kind of a profile, it just gives you a perspective about yourself. तो वहां से उसे व्यू कर सकते हो. और ये ऑप्शन भी है कि सल्क करो, फिर रिजेक्शन मिल गया, इसलिए बेटर है मैं कुछ करूं ही नहीं. एंड देन यू गेट इनटू दैट लूप, दैट स्पाइरल, एंड देन यू आर वंडरिंग कि मेरी लाइफ टेक ऑफ क्यों नहीं कर रही है. Everybody is like enjoying and I am just sitting, because you are just fearing that rejection. It's one fear that you need to confront. Simple. Yeah. I hope you found this meaningful. If you did, if you got a perspective here and you could see कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, how difficult it is for me to handle that rejection, and versus what can I do now. Collect the no's. Like, learn to collect the no's. Any successful person you talk about, they have like a bunch of no's in their basket. I don't think any successful person, anybody who's successful as per you, as per your criteria, go ahead, talk to them if they're around you. You read about the most successful people and there is like a list of no's. But just that, उस rejection को कैसे ले रहे हो will make all the difference. You are rejected only when you decide that, yes, I'm rejected. You put that no right in front of you. Otherwise, every time it's just an opportunity to go to the next level, to do it better, and for something new. Great. Do hit the like button if you found this meaningful. Subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Take care. Bye-bye.